So next we have Shabdam in Mishra Chapu Talam and Raga Ragamalika. Introduced for the first time to Abhinaya, that is expressions. A Shabda means a song or words in the praise of a glory of a god or king. In this Shabdam, it is the pranks of Lord Krishna and how the Gopikas complained about stealing their clothes while having a bath, stealing the milk and butter from the pots which is kept in the house. But in spite of all the complaints, he is still loved by all, and this is the perfect stage to perform this pranks of Supreme Lord Krishna. So, ladies and gentlemen, we have Shabdam in Raga Ragamalika and Talam Mishra Chapu. Please give a very huge round of applause. तळम कुतुम तदिकिणतुम ततयति ततता ततयति ततता तदनतं तण तदिमिति ततो दणगिण तत तजोतरि तादे ततता सरसी जाचुनु जनकमाटे तरुणमुनीवु अचडिकी जने चरिगचीरलु मेलचिकोनि तरुमुने गिड चुजुजुंकुड धर्ममाया सरसी जाचुलु जनकमाटे तरुणमुन्न नीवु अचडिकी जनिगी जरिगचीरनु मेल्लचेरुनि तेरुवुने कीड जोजुजुंडुड धर्मवा सरसी जाचुलु जनकमाटे तरुणमुन्न नीवु अचडिकी जनि जरिगचीरलु मेल्लचेयुनि तरुवुने कीड जोजुजुंडुड धर्ममाया इटु जोजुजुंडुड धर्ममाया तणकुतुम तदिकिणतुम तदनतं तण तदिमिदिमि ततो दणगिण तगतजं तरि तादे तददा कुटिमीदनु पेट्टियुंडे चटिपालनु अटकनु गोनि कोटि चेयुल पटित्रागिन गटितनमीदि कादయ్య పుట్టి మీదను పెట్టియుడే చటిబారను అటగను కొని కొట్టి చేతుల పట్టి త్రాగి గటితన ఇదే కదయ పుట్టి మీదను పెట్టియుడే చటిపాలరు అట్లకను కొని కొట్టి చేతుల
పట్టి త్రాగిన గట్టితనమిది అదయా పలు గట్టితనమిది కదయా తళంకుతోను కదిగినతోను కదన తండన గజను జను జను దతో తగద జోదరి తాతి తదతా అల్లలక్ష్మీ వల్లముడవై తొలియలరే అల్లలోబల గొల్లబాములు కోడివి అది చెల్లు నీగేరి చెల్లునా అల్లలక్ష్మీ వల్లముడవై తొలియల రేపల్లలో బల గొల్లబామలు కూడివి అది చెల్లు నీగిరి చెల్లునా అల్లలక్ష్మీ వల్లముడవై తొలియల రే పల్లలో బల గొల్లబామలు కూడిదివి అది చెల్లు నీగిరి చెల్లునా అది చెల్లు నీగిరి చెల్లునా అది చెల్లు నీగిరి చెల్లునా అది చెల్లు నీగిరి చెల్లునా తళంకుతో తదిగినను తదన తల్దన దదిని నిమిదిని తతో గడగిన తగద జౌదరి తా ఇలను నేను మది తలచి చూడగ నలుగురను నిన్ను నవ్వుదురును చూడు లలిత మలయాళ ఉడతాగిన బళి బళి రషి పద్మనాభ నమోసుతే ఇలను నేను మది తలచి చూడగ నలుగురను నేను నగుదురును లలిత మలయాళ మునదాగిన బళి బళి శ్రీ పద్మనాభ నమోసుతే శ్రీ పద్మనాభ నమోసుతే పద్మనాభ నమోసుతే శ్రీ పద్మనాభ నమోసుతే శ్రీ పద్మనాభ నమోసుతే పద్మనాభ నమోసుతే తగు తరిగిన తగ తగదిన్నం తగు తరిగిన దిన్నం తిరిగిన తగ దిన్నం తరిగిన తళంకుతో తదిగినతో తళంకుతో కడదగ తిరగడతో తళంకుతో కడదగ తిరగడతో కదయతి తదదా తా I'd like to introduce to our chief guest for today's program. She's a classical singer, Bollywood playback singer, fashion show model, actress, music teacher, music director,
folk dance choreographer, only to name a few. She is a Sangeet Visharad, MA in Hindustani classical vocal music, under the guidelines of India's leading classical vocalist, Padma Bhushan Srimati Dr. Prabha Atre and Padma Shri Anup Jalota ji. She has received Mayor Award as Best Music Teacher in 2018, Girnar Sangeet Award from Government of Gujarat in 2019, Shiromani Award in Hindustani Classical Vocal in 2002, Sangeet Kala Ratna Award in 2021, Savitri Devi Phule Puraskar in 2021, and the list goes on. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Chaya Shakre. Please escort us to the stage. तालियों की गूंज सुननी चाहिए. And don't worry, we have dinner afterwards. Srimati Simi Nair, who is a leader of BJP Women's Wing from Borivali, a great social worker. Please welcome Srimati Simi Nair. Now I request our guests to hand over the trophies and certificates. आज पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे ब्यूटीफुल अमेजिंग प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और विजय शंकर जी उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, मुलाकात हुई, और ब्यूटीफुल अमेजिंग गर्ल्स ऑल आर सो नाइस. एवरी रागास के ऊपर जितने भी परफॉर्म किए अभी उन्होंने इतने सुंदर किए. मतलब मैं सोच रही थी कि ये जो कला जो हमारी है ये इन आजकल का जनरेशन जो है उनके थ्रू ज़िंदा रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड में मैं गाती हूँ, मुझे पता है किस तरह के गाने चल रहे हैं, क्योंकि संगीत तो बिल्कुल मतलब इंडियन आइडल हो या सारेगामापा हो, ऐसे जो रियलिटी शोज़ है उनमें भी कुछ कुछ गाने अच्छे गाते हैं, कुछ गाने ऐसे वैसे गाते हैं. तो संगीत ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी, स्पेशली क्लासिकल, कथक डांस हो, भरतनाट्यम हो, हिंदुस्तानी संगीत हो, कर्नाटकी म्यूज़िक हो, तो उसका ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी. तो आजकल का जनरेशन जो है ये जनरेशन के थ्रू ही वो ज़िंदा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, है ना. तो हम तो कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हैं, पर आजकल कितने माता पिता जो है कि क्लासिकल के लिए बच्चों को भेजते हैं. मेरे माता पिता तो 4 साल की उम्र में मुझे गोदी में उठा के क्लास के लिए ले जाते थे. सोचिए, मतलब वो उनका दूरदृष्टिकोण था. गोदी में उठा के ले जाते थे, सिखाते थे, खुद सीखते थे मेरे साथ, फिर मुझे घर ले आते थे, हारमोनियम निकालते थे, फिर मुझे सिखाते थे. ये डेडिकेशन माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी वजह से आज मैं मुंबई में हूँ. उन्होंने मुंबई में सीखने के लिए रखा मुझे, केवल म्यूज़िक, ओनली म्यूज़िक. तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हर माता पिता को कि अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत पढ़ाइए. हमारी जो संगीत की धरोहर है इंडिया की, वो हमारी ज़िंदा रहना और रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को पता नहीं चलता कि कहाँ क्या करना है, फ्यूचर क्या है, मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते वो कि कहाँ जाना है. मुझे कंफ्यूज होते हैं, डांस करना है कि सिंगिंग करना है कि पढ़ाई करनी है. आजकल के बच्चों को तो इतनी पढ़ाई है
इतना बोझा है मतलब सिर पे बच्चों को पढ़ने का, तो उसके साथ साथ कला की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कला एक ऐसी ये कला है कि जो इंसान को ज़िंदा रखती है, एक्टिव रखती है, डिवाइन स्पिरिचुअली सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं हम संगीत से, चाहे गाना हो चाहे डांस हो, सीधे भगवान की ये एक्चुअली पूजा है, भगवान की सीधी सीधी पूजा है ये। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जितने भी आए हैं माता पिता, आप बच्चों को पढ़ाइए, संगीत को ज़िंदा रखिए, और ये हमारे ऐसे गुरु जो है इनकी बदौलत, मतलब इनकी कृपाएं है, बच्चों को इतना पढ़ाते हैं अच्छा। मुझे विजय शंकर जी ने बताया था इनके बारे में बहुत, मैं फ़र्स्ट टाइम इनके प्रोग्राम में आई हूँ, पर मुझे बहुत खुशी मिली, एक कितने दिनों के बाद एक अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए, सुनने के लिए मिला मुझे। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल इनका कि और ऐसे करते रहे और मुझे भी बुलाते रहिए। मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगी, मैं भी ज़रूर गाना चाहूँगी इनके साथ, कथक के साथ, भरतनाट्यम के साथ मैं गाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू सो मच। Ma'am, I would request you to please felicitate our students with their honor, what you say, Trophies award, and, trophies and certificates. They are waiting for that. I'll call upon Tashvi Pujari. Tashvi, please come on the Ashvi, stage. please come on the stage. Please come this side. Karon Chettiar. भाई और बहनों, तालियां बजनी ही चाहिए। प्रियल माली। अक्षरा पिल्लै। अविशा शर्मा। कविप्रिया तानसिंह। Kavipriya is quite famous. And Mrinali Pawar. Thank you, Chaya ma'am. Thank you, Simya ma'am, for being here. Thanks a lot. Maitri Shastri, who is the assistant teacher of Saraswati Kala Kendra. Please welcome Maitri Shastri. Good evening, everyone, and नमस्ते। आज के इस पवित्र अवसर पर हम जीवन की असली समृद्धि, जो धन, ज्ञान, साहस, शांति, परिवार, अन्न, विजय और आध्यात्मिक प्रगति से मिलता है, उसका सम्मान करते हैं।
इन सभी पहलुओं का आशीर्वाद हमें मिलता है अष्टलक्ष्मी के रूप में, जो लक्ष्मी जी के 8 दिव्य स्वरूप है। हर रूप जीवन के किसी एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पहला, आदि लक्ष्मी। सृष्टि की आदि शक्ति। हे आदि लक्ष्मी, सृष्टि की शुरुआत करने वाली तुम माधव की सुंदर पत्नी हो, चंद्र की बहन हो, रिश्तेदारों द्वारा पूजित हो। तुम्हारी मधुर वाणी और शांत स्वभाव हमें धार्मिकता, आस्था और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तुम कमल पर विराजमान हो, वेद तुम्हारी स्तुति करते हैं। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय पत्नी। दूसरी, धनलक्ष्मी, धन समृद्धि देने वाली। हे धनलक्ष्मी, तुम धिम धिम के मधुर नाद में मग्न रहती हो। तुम शंख और दिव्य वाद्यों से पूजती हो। वेद, पुराण और इतिहास तुम्हारी महिमा गुनगुनाते हैं। तुम हमें धन, सोना, चांदी और आर्थिक समृद्धि प्रदान करती हो। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय पत्नी। धान्य लक्ष्मी, अन्न और पोषण की देवी। हे धान्य लक्ष्मी, तुम हमारे भंडारों को अन्न से भर देती हो। तुम वेद स्वरूप हो, क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे चरणों में सभी देवताओं शरण लेते हैं। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय पत्नी। चौथी, गजलक्ष्मी, गरिमा और शौर्य की देवी। हे गजलक्ष्मी, हाथी द्वारा पूजित हो। तुम रथों, हाथों, सैनिकों से घेरी हो। हरि, शिवा और ब्रह्मा भी तुम्हारी महिमा का गुणगान करते हैं। तुम विपत्ति का नाश कर सबको दुख दूर करती हो। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय पत्नी। पांचवी, संतान लक्ष्मी, परिवार और संतान की देवी। हे संतान लक्ष्मी, गरुड़ तुम्हारा वाहन है। तुम प्रेम, ज्ञान और सद्गुणों की मूर्ति हो। सप्त सुरों में तुम्हारा गुणगान होता है। देवता, दानव, ऋषि और मानव तुम्हारे चरणों में वंदन करते हैं। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय पत्नी। वीर लक्ष्मी, साहस और धैर्य की देवी। हे धैर्य लक्ष्मी, तुम वरदान का पहल करती हो। तुम ज्ञान और साहस प्रदान करती हो। शास्त्रों में तुम्हारी महिमा का वर्णन है। तुम संसारिक भयों का नाश करती हो। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय पत्नी। सातवीं, विद्या लक्ष्मी, ज्ञान और शिक्षा की देवी। हे विद्या लक्ष्मी, तुम भैरवी हो, भारती हो और सबका दुख दूर करती हो। तुम्हारा प्रसन्न मुख शांति और प्रकाश देता है। तुम नवनिधि का प्रदान करती हो और बुद्धि की देवी के रूप में जीवन में प्रकाश भर देती हो। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय विजय लक्ष्मी, जीत और सफलता की देवी। हे विजय लक्ष्मी, तुम कमल पर विराजमान हो। तुम प्रेम बरसाती हो, ज्ञान को विकसित करती हो। तुम्हारा संगीत यंत्रों के माध्यम से होता है और तुम कंकधरा स्तोत्रों में भी व्यक्त हो। विजय हो हे मधुसूदना की प्रिय पत्नी। आइए शुरू करें अष्टलक्ष्मी। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो सुमनसवन्दित सुन्दरी माधवी चन्द्र सहोदरी हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलभाषिणी वेदनुदे पङ्कजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय अयि कलि कल्मषनाशिनी कालिनी वैदिकरूपिणी वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणी मन्त्रनुदे मङ्गलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन धान्यलक्ष्मी सदा पालय जय वरवर्णी वैष्णवी भार्गवी मंत्रस्वरूपिणी मंत्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनी शास्त्रनुते भवभयहरिणी पापविमोचिनी साधुजनाश्रित पादयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी सदा पालय जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये रदगज तुरगपदानि समावृत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी श्रीगजलक्ष्मी पालय खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविवर्धिनी ज्ञानमयी
సంతానలక్ష్మి పాలయమా. జయ కమలాసిని సద్గతిదాయిని జ్ఞాన వికాసిని గానమయే అనుదిన మంచిత కుంకుమధూసర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే కనకధరాస్తుతి వైభవవందిత శంకర దేశిక మాన్యపదే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మీ సదా పాలయమా. ప్రణద సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోక వినాశిని రత్నమయే మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ శాంతి సమావృత హాస్య ముఖే నవనిధి దాయిని కలిబలగారి కావ్యబల ప్రద హస్తయుదే జయ జయ హే మధుసూదన కవిని విద్యాలక్ష్మీ సదా పాలయమా. దిమి దిమి దిం దిమి దిమి దిం దిమి 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 దిల్ దిమి దిమి దిం దిమి కుందు వినాద పూర్ణమయే గుమ గుమ కుంగుమ 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 శంఖనినాద సువాద్యనుతే వేద పురాణేతి ఆససు పూజిత వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే జయ జయ హే మధుసూదన గామిని ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయమా. ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయమా. ఆదిలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి గజలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి విజయలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి ధనలక్ష్మి అష్టలక్ష్మి
लक्ष्मी तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम अष्टलक्ष्मी का सम्मान करते हैं, हम अपने जीवन का हर पहलू का समाप्त करते हैं। उनकी उपासना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए मिलकर अष्टलक्ष्मी के ये दिव्य रूपों को सम्मान करें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। పవమాన సుదడు పగు పాదార విందములకు నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం రాజీవ నయన త్యాగరాజ వినుదమైన నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మగనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళో శుభమంగళో సర్వమంగళో. A big round of applause for everyone. I would like to thank all of our musicians, Shri Shiv Prasad Sir, Shri Prajesh Nair, Shri Krishnan Natarajan, Shri Bharataraj, and none other than our Guru, Shri Sumita Murli. Now, I would like to call upon our Guru, Shri Mati Sumita Murli, for vote of thanks. Thank you so much, all of you, for being patient, taking out so much time for our kids. Thank you so much. A round of applause for all the participants, for all the musicians here, all the parents, and of course, you audience, for being here today and adding grace to this beautiful celebration of our students' journey in dance. We would especially like to express our heartful gratitude to the parents, the true backbone of this event. Please give them a big hand. Your constant support, encouragement, and involvement through every phase of the Salangi Puja
or Gaj Puja have played a vital role in making this day a grand success. Can we have a grand round of applause to all the parents, and please come on the dais. All the parents, this moment of appreciation is for you. Please come on the stage. Your love and dedication continue to inspire our young dancers every step of the way. I want all the parents, please come on the stage. Let the audience